Chapter 13, Surface Area and Volume. Session 4, let's start. Today we are going to see the area of the right circular cone. Now, what do you mean by right circular cone? So, see here, it is a cone means it's a shape of a joker's cap. Shape of a joker's cap, right? So, in which this inclined line is called L, slant height. This is called the L, slant height. This is called the H, height of the cone. This is called the H, height of the cone. And this is called the radius of the cone. So this thing you need to know very well, because see, if you will given the height, that means it's simply a H. If you are given the height, it's simply the H. But if you are given the slant height, that means it is going to be the L. Simple height, it's an H. Slant height, it's an L. And this is the radius, right? It is the radius of the cap. Okay. Right. Now let's move. Okay. From this is the right circular cone, right? Right circle. So this is the right angle. In the right angle triangle, you can apply the Pythagoras theorem. So this is the hypotenuse. So hypotenuse is then L square. L square is equals to R square plus H square, right? So that means L is equals to be a square. वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? Square root. So it is going to be the R square plus H square. Okay. चलो आगे बढ़ें. See, तो ये कोन फॉर्म कैसे होता है? अगर मैंने यहाँ पे ट्राइंगल ले लिया और अगर उसको मैं घुमा रहा हूँ तो उसको घुमाने के बाद ये क्या फॉर्म हो जाएगा? एक कोन फॉर्म हो जाएगा, राइट? दिस इज द बेसिक थिंग. एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया इज द पाई आर एल, राइट? वी नो द एरिया ऑफ द सर्कल. यहाँ पर सर्कल बनने वाला है, सो उसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर. बट यहाँ पर हमको आर ही लेना है, बिकॉज अगर वो सिलेंडर होता तो पाई आर स्क्वायर पाई आर एच हो जाता. सो इन दैट वे हियर वी हैव टू कंसिडर द एल. So we have to take here the L, pi r L. Okay, so now the total surface area, right? So total surface area is what? So this is the first of all the curved surface area is pi r L. First of all the curved surface area. और ऊपर से अगर ये कोन ढका हुआ है, मतलब पैक है, तो ऊपर का सर्कल भी काउंट करना पड़ेगा. That is going to be the added pi r square. So इन दोनों में से pi r common, so in bracket L plus r. So pi r in bracket L plus r. So L is equals to, और ये जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था, राइट, ये वाला कि दैट इज दी L इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. सो जो आपको फिगर में ऑलरेडी दिख रहा है, एंड दिस इज राइट एंगल, ऑपोजिट इज हाइपोटेनियस. सो L स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ओके, चलो आगे बढ़े. ओके, नाउ एक्सरसाइज. द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल द कर्व्ड सरफेस एरिया इज व्हाट? Pi r L. Total surface area is what? So it is nothing but the pi r in bracket L plus r. So ये दो चीजें याद रखना, पूरा का पूरा एक्सरसाइज आराम से सॉल्व हो जाएगा. So the diameter is given. So the diameter is 10.5. So the radius is 10.5 divided by 2. It's the slant height. L is equals to given, and that is 10. So we have to find out the curved surface area. So what is the curved surface area? It is nothing but the pi r L. So what is the value of pi? 22 divided by 7. What is r? R is nothing but the 10.5 divided by 2. And what is the L? L is nothing but the 10. Right? अब ये तो कट होने वाला ही है. This is 15 sevens. So 7 cut. Here is the 1.5. Right? This is the 11 2s. So 11 10s. 1 10 is the answer. ये simplification आपको करना है अपने आप. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना easy होगा. So in that way you need to practice it. Right? So solution R is this. The curved surface area is pi r L. We just need to put the values. So यहाँ पर मैंने 10.5 डिवाइड बाई 2 डायरेक्ट 5.25 लिख दिया. अगर वो अब यहाँ पर आपको ऐसे ही रहना दोगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा, राइट? एंड सो द आंसर इज 1. ओके, यहाँ पर ये 7 कट करना हम लोग भूल 7 कट किया था. ओके, आई डोंट नो व्हाट इज द मिस्टेक दैट वी डिड. ओके, चलो यहाँ पे वापस एक बार देख लेते हैं, राइट? इसको यहाँ पे भूल जाओ थोड़ी देर के लिए. इट इज नथिंग बट द 10.5 डिवाइडेड बाई 2. दिस इज ओके 1.5. हियर वी हैव द 1.5 दैट वी मिस. That is 110 into 1.5. So it is nothing but the 11 multiplied by 15, and that is going to be the 165. So the what we miss is 1.5. Okay, so easy, just the simplification stuff, right? And you will end up with the 165. चलो आगे. So total surface area of the cone. Find out the total surface area. We have to find out the TSA.
that is nothing but the pi r in bracket r plus l. So height, slant height is given, so slant height means we have given the l and that is 21, so put the 21 instead of l. And the diameter is given what? 24. If diameter is 24, see diameter is 24, so r is equals to what? It is half of the diameter, so it is going to be the 12. Here also 12, multiply by 22 by 7, and you just end up with the answer. Right, so this is the slant height L, r is the 24 by 2, that is 12 meter, and then the total surface area is pi r in bracket l plus r. Total surface area is 22 by 7 into 12 in bracket 21 plus 12, and this is the answer. देखो यहाँ पर मैंने पॉइंट में लिखा है, अगर आपको डिवीजन करने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो कि भाई न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन कर दो और डिनोमिनेटर में 7 एज इट इज रहने दो, सो दैट इज ऑल्सो फाइन. ओके, अगर आपको पॉइंट में नहीं लिखना है तो आपको फ्रैक्शन में रख के छोड़ दो उसको, तो भी चलेगा. ओके, नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज 308. ओके, यहाँ पर आपको दिया है सी ए से कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज ऑलरेडी गिवन and that is 308. Now the slant height is given and we have to find out the radius. So what is the curved surface area? It is pi r l. Slant height we have and that is 14 is equals to 308. Now what is the value of pi? That is 22 by 7 into 14 into r is equals to 308. This is cutted out. Now 22 2s are 44. Now 44 from the numerator goes into the denominator. अब इसको कट्टी उट्टी करो, यू विल एंड अप विद द आंसर. राइट, चलो देखते हैं. राइट, द कर्व्ड सरफेस एरिया इज पाई आर एल. 308 इज इक्वल्स 22 by 7 इंटू आर इंटू 24. अब यहाँ से क्या किया है, सिंपल सा है, देखो सॉरी ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे, नॉट इज इक्वल्स टू, राइट, इट्स 7 इज इन दी, ये दोनों कट, दिस इज 7. Okay, sorry, this is the answer. The radius is 7. The radius is 7. कैसे आया? So देखो ये है ना 11 से divisible है. So 308 divided by 11. So 11 2s are 22. 8 8s are so 28. So 28 11s are, and this is 11 2s are 11 cut. Right? This is 7 4s are, so 4 और नीचे ये 4 भी cut. So answer is what? 7. So this is the 7 is the answer. So radius is 7. So hence the base radius is 7. Now the second question is the total surface area of the cone. We have to find out the total surface area of the cone. That is also easy. You just need to put the values into the equation, and that is pi r in bracket r plus l. What is pi? 22 by 7. Multiply by what is r? That is also 7. यहाँ पे 7 plus what is l? L is 14. 7 cut. This is 21. 21 into 22 is your answer. Simple, right? So this is 22 into 21, right? So this is the 462 centimeter square is your answer. That is the total surface area of the cone. यहाँ पे बड़ा सिंपल सा है, आपको सिर्फ फॉर्मूलाज याद रखने हैं, फॉर्मूलाज में वैल्यूज रखनी है, दैट्स इट. द कोनिकल टेंट, अब यहाँ पर शेप ही दे दिया है, कोन का है. सो कोनिकल टेंट हैज अ 10 meter height. So we have given height, that means it's an h. The radius of the base, that is r, is 24. Find out the slant height. तो slant height find करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला डायरेक्टली अवेलेबल है, and that is r square plus h square. In bracket, what is the value of r? That is 24 square plus 10 square. 24 square is 576 plus 100. It's 676, and 676 square root क्या होगा? 26. So your radius going to be the 26, right? So you see the slant height, sorry, my mistake, it's a slant height. Slant height is going to be 26 meter. Now the cost of the canvas, now what we have to find is the cost of the canvas required to make the tent at the cost 1 meter square canvas at the rupees 70. तो 70 रुपीज़ दिया है हमको 1 मीटर स्क्वायर का, तो हमारे पास कितना स्क्वायर मीटर है? तो पहले हमको क्या फाइंड करना है? टेंट है तो टेंट हम ऐसे ही बना देंगे, बेस में कुछ कपड़ा वपड़ा नहीं रखते, तो टेंट खाली यहाँ पर ही बनेगा. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज पाई आर एल, और जो भी आंसर है उसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 70 से. सिंपल, राइट? चलो, सो द कर्व्ड सरफेस एरिया इज पाई आर एल. सो यू सिंप्लीफाई दिस, राइट? तो ये आपका आ गया एरिया.
सो नाउ मैंने क्या बोला था, इसको मल्टीप्लाई पे क्या कर देना है 70. अब ये दोनों कट, यहाँ पर आ गया 10. अब ये सारे के सारे को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल एंड अप विद द आंसर. एंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड इज 1,37,280. राइट, सिंपल सा सम है, सारे सम्स ऐसे ही सिंपल है, और जो थोड़े से चैलेंजिंग सम्स थे वो तो ऑमिट हो गए हैं. सो आई होप कि यहाँ पर आप अच्छा सा कवर कर सकते हो. चलो आगे. So let's move on to the next question, and that is question number 5. What is the length of the terpollium? What is the length of the terpollium? 3 meter wide. See, the terpollium is nothing but the cloth, right? So its width, we don't, that is 3. The width is 3, and we have to find out the length of the terpollium. So from this terpollium, we have to make a conical tent. We have to make a conical tent. But in the tent, we do not have the base, so we just have to consider the pi r l. So the area of this and area of this is going to be the same, because यहाँ से ही हमने टेंट को बनाया है, तो उसका एरिया L इंटू बी इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है, बाई आर एल. बट यहाँ पर 20 सेंटीमीटर का मार्जिन ड्रॉप किया हुआ है, राइट. तो यहाँ पर जो भी अपना L आएगा, जो भी L आएगा उसमें कितना हम ऐड करेंगे, 20 सेंटीमीटर. कितना ऐड करेंगे, 20 सेंटीमीटर. तो यहाँ से आपको मिल जाएगा L, और जो भी L आंसर आए उसमें हम क्या कर देंगे, 20 सेंटीमीटर को ऐड कर देंगे. चलो देखते हैं. सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया, एंड बिफोर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ. व्हाई? बिकॉज we have given the height, and that is h is equals to 8, radius r is equals to given 6. So here it is 64, right? So the square root of 100, and this is going to be the 10. So L is going to be the 10, right? And then we have to move ahead. So L is 10, and then the curved surface area is pi r l. We'll put the value and we'll get the 188 point, see simple, it's a 188.4. now अब ये जो भी आंसर है उसका एरिया और L भी कैसा होने वाला है, सेम होने वाला है. चलो देखते हैं. So we know that now the area of material is equal to the area of tent. So L into B is equal to area of tent, L into 3, because we know the breadth, that is 3. So that 3 from the numerator goes into the denominator, and then it is a 188.4 divided by 3, it is 68.2. now ये तो हमारा लेंथ आ गया, लेकिन उसमें हमने मार्जिन रखा था. ये इतना टर्पोलियम है तो उसमें हमने इतना सा मार्जिन रखा था, तो ये कितना था, 20 सेंटीमीटर का था. now we have this length, we have 62.8, and this is the margin, that is 20 centimeter, it is the 0.2 meter. So इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा भाई, हमारा 63. So now the margin is 20 centimeters. So total length is the length calculated per margin. So it is 68.2 plus 20 by 100, because the unit must be same. ये मीटर तो ये भी मीटर में होना चाहिए, अदरवाइज इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, right? 0.2. So now what we can say? So length of the terpollium is 63 meters. Now let's move on to the next sum. So now we have see the hemisphere. The surface area of the hemisphere. The surface area of the hemisphere is 4 pi r square. Right? ये पूरा का पूरा स्फीयर है, तो स्फीयर का क्या होगा, 4 pi r square. ये हमारे पास है हेमिस्फीयर. क्या है भाई, हेमिस्फीयर है. तो हेमिस्फीयर के लिए क्या होगा भाई, इसका हाफ, and that is 2 pi r square. That is but curved surface area. Here if we are considering the total surface area, that means we have to consider this top surface also. We have to consider this top surface also. So this top surface, if I am going to include this top surface, so what is that? That is going to be the pi r square. So pi r square, और इसका curved surface area होगा 2 pi r square. So that is going to be the 3 pi r square. Right? So curved surface area and the total surface area. So let's move. Simple. Find out the surface area of the sphere with the radius 10.5. So the sphere दिया है तो simple है 4 pi r square. 4 into 22 by 7 into 10.5 divided by 2 into 10.5 divided by 2. This is 4 and 4 cut. This is 1.5. अब इसका multiplication करो, जो भी आएगा वो आंसर. Right? See this 1 to 10.5 square. Okay, division में 2 जो लिखा था मैंने वो mistake हो गई मेरी, because यहाँ पर radius दिया है, I am considering that the diameter. So sorry for that. It's simply a 10.5 square. Right? 10.5 to 10.5. और यहाँ पर इसको कट करो, you will end up with the 1.5.
एंड देन सिंपल इन सब को मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल गेट द आंसर. इट्स 1 3. बाकी के जो सिंपल है, खाली आपको क्या करना है भाई कि खाली यहाँ पर ये जो 10.5 लिखा उसकी जगह पर 5.6 और लास्ट सम में 14 लिख, देन यू विल गेट द आंसर. सिंपल है, दो सम आप सेल्फ प्रैक्टिस करो. और सिमिलरली यहाँ पर अब डायामीटर्स दिए, क्या दिया है कि डायामीटर दिया, तो डायामीटर में क्या होगा, सिंपल 4πr² ही आएगा. लेकिन करना क्या पड़ेगा भाई, 4 × 22/7 into 14/2 into 14/2 because we have to convert the diameter into the radius. This is 4 and 4 cut, this is 2s are, so 22 2s are 44, 44 into 14 is your answer. See, 7 square, so the 7 and 7 cut, right? So 616 is your answer. Now the last two is your self practice. Okay, so to find out the total surface area of the hemisphere of the radius 10 centimeter. Find out the total surface area of the hemisphere of the radius 10 centimeter. हेमिस्फीयर दिया था, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 3πr². सो 3 × 22/7 × r. तो r कितना दिया है, 10 × 10. लेकिन यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 दी है, क्या दिया है 3.14. तो यहाँ पर हम लेंगे क्या कि भाई हम लेंगे यहाँ पे 3.14. दिस इज 100 into 3.14, so it's a 314 multiplied by 3. 3 4s are 12, 1, 3 1s are 4, and 3 3s are 9. So 942 is your answer. See, so 942 square centimeter is your answer. Now, a radius of a spherical balloon increases. Radius of the spherical balloon increases from 7 to 14 centimeter as air is being pumped into it. Find out the ratio of the surface in this two case. तो पहले कितना रेडियस, सॉरी ओके, हमको क्या फाइंड करना है, रेशियो इन दिस टू केस. सो मतलब क्या फाइंड करना है कि भाई उसका कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो, दैट मीन्स πrl अपॉन πrl. लेकिन यहाँ पर सॉरी πrl नहीं, यहाँ पर है बलून जो होगा तो क्या होगा, स्फेरिकल होगा. तो क्या आएगा 4πr² अपॉन 4πr². 4π कट, यहाँ पर क्या होगा, तो भाई 7 से क्या हो रहा है 14, उसका स्क्वायर. सो 7 यहाँ पे हो गया 2, सो इट्स 1/2 होल स्क्वायर. अब ये स्क्वायर 1 का भी है और ये स्क्वायर 2 का भी है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4. तो आंसर इज 1:4. See, the radius is 7, the surface area is 4πr², and for when the radius r is 14, the area is 4π into 14 into 14, and the ratio is going to be this. ये दोनों कट, ये दोनों भी कट, और नीचे आएगा 2 into 2, 2 2s are 4. So answer is 1/4. So the ratio is 1:4. Okay, the hemispherical bowl is made up of a brass as the inner diameter 10.5 and the cost of tin plating at the inside at the rate of 16 per 100 square centimeter. तो सबसे पहले क्या करना है भाई, हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर का हम क्या फाइंड करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज गोइंग टू बी द 2πr². अब क्या दिया है कि 100 स्क्वायर सेंटीमीटर का कॉस्ट है 16 रुपीज, राइट. तो हमारे पास 100 का इतना है, तो ये जो भी आंसर रहेगा उसका कितना, सो इट्स डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 16. सो ये हमारा होगा answer. This is your final answer. Within a step you can write down the answer if this kind of a sum is asked in the MCQs. So, but here we see the step by step. So first of all we find out the area, and the area of the inner surface is this. Okay, then we have the inner curved surface area is 173.25 centimeter square. Now we know that the cost of tin plating for the 100 square centimeter is 16. So cost of tin plating for the 173.25 divided by 100 multiply by 16. So you just multiply this two. Simply first of all multiply this two, and जो भी point है उसको दो बार move कर लो इस side. So you will end up with the 27.72 rupees. Simple sum. Okay, this sum is not there in the. This sum is not there in this. This is omitted sum, but it is as somewhat important as far as your SSC is concerned. So just go through it. Simply just आप देख लो इसको एक बार.
फिर फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया. अब सरफेस एरिया स्फीयर का दिया है तो सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होगा, तो भाई 4πr². और वो कितना दिया है कि भाई 154. चलो आर फाइंड करना है तो 4 पे ऊपर से नीचे चला जाएगा तो r² इज इक्वल्स टू 154/4 इंटू पाई. पाई की वैल्यू 22/7. अब इसको कट करो. चलो this is the divisible by 11, so it is nothing but the 11. I hope 11 14s are 11 14s are. This is, and this is going to be the cut it out. This is going to be the 11, sorry 2s are. Okay, let me just check this. So 154 divided by 11, 1s are 11, 4 it's a 14 only, yes. It's an 11 multiplied by 14. So this is 11 2s are. This is 7 and this is 2s are. So answer is 7 square divided by 2 square. So r² is equals to 7 divided by 2 whole square. Square square सामने सामने से cut. So answer is 7 divided by 2. So radius is going to be the 3.5. So this kind of a sum is important. See 4πr², 154, and you can just see this. 7 नीचे से जाएगा ऊपर, 22 ऊपर से जाएगा नीचे, 4 भी ऊपर से जाएगा नीचे. सिंपल. इसको कट करो. कट करते जाओ and you will end up with the r is equal to 7/2 and 3.5 is your radius. So that's it for today. We will meet into the next lecture. Till then, bye bye and work hard.